हेलो एवरीवन, आर्या पढ़ रहे हैं। आर्या पढ़ेंगे आज भी। आर्या का एक एक इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल बना के मैं आपको शेयर कर रही हूँ और एक्सप्लेनेशन वेल दे रही हूँ। आई होप सो कि आप बहुत आगे जाएंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो आज हम पढ़ेंगे आर्या डैश डिस्क्राइब बाय। क्या है? आर्या डैश डिस्क्राइब बाय। Row 40, row 41, column 1, area dash spelling error described the heading level 1. आर्या डैश डिस्क्राइब बाय, ये एट्रीब्यूट है। Column 2, column 1, area dash spelling error described the heading level 1. डिस्क्राइब बाय लिखते हैं एक साथ तो वो स्पेलिंग एरर बताएगा। Column 2, डिस्क्रिप्शन देखिए। column 3, the area dash spelling error described the attribute lists the link IDs out of link of the elements that describe the object. It is used to establish a relationship between widgets or groups and the text that describes them. The area dash spelling error described the attribute is not limited to form controls. It can also be used to associate static text with widgets, groups of elements, regions that have a heading, definitions, and more. The area dash spelling error described the attribute can be used with semantic HTML elements and with elements that have an area link roll out of link. The area dash spelling error described the attribute is very similar to link area dash spelling error label the out of link attribute. While the area dash spelling error label lists the IDs of the labels or elements that describe the essence of an object, the area dash spelling error described lists the IDs of the descriptions or elements providing more information that the user might need. Both area dash spelling error label and area dash spelling error described reference other elements to calculate a text alternative, but a label should be concise, while a description is intended to provide more verbose information. A label describes the essence of an object, while a description provides more information that the user might need. The elements linked by area dash spelling error described don't need to be visible. It is possible to reference an element even if that element is hidden. For example, a form control can have a description that is hidden by default that is revealed on request using a disclosure widget like a quote more information quote icon. The cited user clicks on the icon. For assistive technology users, the description is referenced from that form field directly with area dash spelling error described the area dash spelling error described property is appropriate when the associated content contains descriptions experienced as plain text. If the content contains a large amount of content, useful semantics, or has a complex structure requiring user navigation, use link area dash details out of link. Area dash details allows assistive technology users to visit the associated structured content and provides additional navigation commands, making it easier to understand the structure, or to experience the information in smaller pieces. देखिए, इसको एक बार और सुन लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, एक बार और सुनेंगे आप लोग। Out of table page 54, line feed. Rate 25, rate 20. Table with 2 rows and 3 columns. Area dash spelling error described the heading level 1. Area dash spelling error described. Area dash spelling error described the heading level. Area dash column 2. ठीक है, Column 3, row 2, column 1, area dash spelling error label at the heading level. Column 2. Table with 3 rows and 3 columns. Level 1, row 3, column 1, heading level 1. Column 2. Column 3. Table with 4 rows and 3. Column 2. Column 3. Table with 5 rows and 3 columns. Out of table with 40 rows and 3 columns. Level 1, row 1, column 1, page 1 element. 10 मिनट, 1 मिनट। Microsoft Word, Dontic T. Pane. Area dash programs window. Area no. Area area repository. Microsoft of Privacy. Help close but area repository dash Microsoft Word left paren. Out of table. 1.5 inches. 2 inches. 2.5 in. Tap carriage return. Blank. 1.5, 2 inches. 10 मिनट, Tap फ्रेंड्स। blank. 1 मिनट। Microsoft Word dialog. Do you want to save change? Dontic T. Pane. Area dash programs window. Items view list. Area repository. Opening area repository dash Microsoft Word 1 left मिनट। हाँ, मुझसे कुछ डिलीट हो गया, 1 सेकेंड। मैंने जो लिखा था उसमें से बहुत कुछ डिलीट हो गया एकदम। रुक जाइए।
element, element, element. Row 2 button. Row 1 element. Column 2, column, row 2. Just a minute, huh? Yeah. Page 6 blank. Row 9, column 2, row 12, column. Row 27, column. Table with 46. Row 45, column 2. Column 1 heading level 1. Row 44, column 2. Column 1. Row 42, column 3, page 4. Column 1. Column 2. Column 1 area dash spelling error described by heading level 1. आर्या डैश डिस्क्राइब बाय, इसको सुनेंगे दोबारा से. Column 3 the area dash spelling error described the attribute lists the link IDs out of link of the elements that describe the object dot. It is used to establish a relationship between widgets or groups and the text that describes them dot. The area dash spelling error described the attribute is not limited to form controls dot. It can also be used to associate static text with widgets, groups of elements, regions that have a heading, definitions, and more dot. The area dash spelling error described the attribute can be used with semantic HTML elements and with elements that have an area link roll out of link dot. The area dash spelling error described the attribute is very similar to link area dash spelling error label at the out of link attribute dot. While the area dash spelling error label at the lists the IDs of the labels or elements that describe the essence of an object, the area dash spelling error described the lists the IDs of the descriptions or elements providing more information that the user might need dot. Both area dash spelling error label FB and area dash spelling error described the reference other elements to calculate a text alternative, but a label should be concise, while a description is intended to provide more verbose information, a label describes the essence of an object, while a description provides more information that the user might need dot. The elements linked via area dash spelling error described the don't need to be visible dot. It is possible to reference an element even if that element is hidden dot. For example, a form control can have a description that is hidden by default that is revealed on request using a disclosure widget like a quote more information quote icon dot. The cited user clicks on the icon For assistive technology users, the description is referenced from that form field directly with area dash spelling error described by dot. The area dash spelling error described by property is appropriate when the associated content contains descriptions experienced as plain text dot. If the content contains a large amount of content, useful semantics, or has a complex structure requiring user navigation, use link area dash details out of link dot. Area dash details allows assistive technology users to visit the associated structured content and provides additional navigation commands, making it easier to understand the structure, or to experience the information in smaller pieces dot. आर्या डैश डिस्क्राइब बाय, आर्या डैश डिस्क्राइब, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है डिस्क्राइब बाय. देखिए आर्या में 3 चीज बहुत यूजफुल होती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं. यूजफुल भी, इम्पोर्टेंट भी. क्या क्या? पहला आर्या डैश लेबल, ये एट्रीब्यूट. दूसरा आर्या डैश लेबल्ड बाय. पहला क्या? आर्या डैश लेबल्ड. दूसरा आर्या डैश लेबल्ड बाय. और तीसरा आर्या डैश डिस्क्राइब बाय. आर्या डैश डिस्क्राइब बाय, दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट. आर्या डैश लेबल का यूज करेंगे तो आप साइटेड यूजर नहीं देख सकते. असिस्टिव टेक्नोलॉजी को ये फायदा होगा कि ब्राउजर इंडिकेट कर देगा, वो स्क्रीन रीडिंग यूजर जो है वो उसको सुन सकते हैं. स्क्रीन रीडर पढ़ के बताएगा.
लेकिन आर्या डैश लेबल्ड बाय और आर्या डैश डिस्क्राइब बाय, इसमें क्या होगा कि इस ये आर्या का यूज हुआ है और ये एट्रीब्यूट यूज हुए हैं, इसका फायदा विजुअली चैलेंज्ड को भी होगा और साइटेड पर्सन अगर वो इंस्पेक्ट करके देखना चाहें तो वो देख सकते हैं कि आर्या का यूज किया गया है। अब बात आर्या डैश डिस्क्राइब बाई की हो रही है, तो लेबल्ड बाई और डिस्क्राइब बाई दोनों ही विजिबल हैं साइटेड यूजर्स के लिए भी और बेनिफिटेड हैं किसके लिए, विजुअली चैलेंज के लिए भी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूजर्स के लिए भी। लेकिन डिस्क्राइब बाय में क्या होता है कि डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा मिल जाती है। कोई भी एलिमेंट जो या कोई भी कंपोज विजिट बताया था, मैंने आपको विजिट बताए थे, अगर उनका डिस्क्रिप्शन के साथ उनका हवाला या विवरण दिया गया है तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूजर्स को उनकी डिस्क्रिप्शन भी सुनने को पढ़ने को मिल जाएगी अगर वहां पर आर्या डैश डिस्क्राइब बाय एट्रीब्यूट यूज हुआ है। कौन सा? आर्या डैश डिस्क्राइब बाय। डिस्क्राइब मतलब डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन। जैसे कि एग्जाम्पल दी है, क्या, एक फॉर्म है उसमें जो जो एलिमेंट्स यूज हुए हैं और वहां पे दिया है कि इफ यू वांट टू रीड डिस्क्रिप्शन क्लिक ऑन द आइकॉन या क्लिक हियर ऑन द आइकॉन, या ये सिर्फ दिया हो क्लिक हियर या क्लिक ऑन द आइकॉन, तो आइकन तो उन्हें पता है कहाँ है, वो क्लिक कर देंगे, आपको तो नहीं पता ना, मुझे तो नहीं पता। तो आर्या डैश डिस्क्राइब बाय एट्रीब्यूट अगर वहां यूज हुआ है तो ये किसके लिए बेनिफिट होगा? असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूजर यानी स्क्रीन रीडर यूजर्स को। तो यही है आर्या डैश डिस्क्राइब बाय एट्रीब्यूट, जो रोल एलिमेंट के साथ यूज करेंगे तो उनका डिस्क्रिप्शन भी अगर जिनका आप देना चाहते हैं वो वहां पर प्रोवाइड करेगा, ब्राउजर को इंडिकेट करेगा, असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूजर्स को उनका डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। और ये दोनों के लिए विजिबल है, साइटेड और विजुअली चैलेंज के लिए। आई होप सो कि आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वो डिलीट हुई हुई चीज़ों को अंडू करने में ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा आपको बीच में। चलिए नेक्स्ट। Row 42, column 1, area dash spelling error label FB heading level 1. देखिए आर्या डैश लेवल्ड बाई, जो आर्या डैश डिस्क्राइब बाई, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं। Column 2. थर्ड में सुनिए, इसका डिस्क्रिप्शन सुनिए, थर्ड कॉलम में। Column 3, the area dash spelling error label FB property enables authors to reference other elements on the page to define an accessible name. This is useful when using elements that don't TIC have native support for associating elements to provide an accessible name. Some elements get their link accessible name out of link from their inner content. For example, the accessible name for a link less button greater, lesser greater, out of link, or link less td greater out of link comes from the text between the opening and closing tags. Other elements, such as form link less spelling error text area greater, less spelling error field set greater, out of link, and link less table greater out of link get their accessible name from the content of associated elements. For these elements, the accessible name comes from the link less label greater out of link with a for attribute, link less legend greater, out of link, and link less caption greater out of link respectively. Area all interactive elements must have an accessible name. Area dash spelling error label FB can be used to reference another element to define its accessible name, when an element TIC's accessible name needs to use content from elsewhere in the DOM. If there is no content that can be referenced to create an accessible name, the link area dash label out of link attribute should be used instead. The purpose of area dash spelling error label FB is the same as that of area dash label. It provides the user with a recognizable, accessible name for an interactive element. If an element has both attributes set, area dash spelling error label FB will be used. Area dash spelling error label FB takes precedence over all other methods of providing an accessible name, including area dash label, link less label greater, out of link, and the element TICS in a text. The area dash spelling error label FB and link area dash spelling error described the out of link attributes both reference other elements to calculate text alternatives. Area dash spelling error label FB should reference brief text that provides the element with an accessible name. Area dash spelling error described is used to reference longer content that provides a description.
If there is no element in the DOM that provides a brief label appropriate for an accessible name for an interactive element, comma, use area dash label to define the accessible name for an interactive element. Dot. अब क्या है आर्या डैश लेबल बाय क्या है? तो आर्या डैश लेबल में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट या उसके रोल से जुड़ा हुआ कुछ भी अगर कोई नेम दे रखा है तो वो उसको पढ़ के सुनाएगा, लेकिन वो विजिबल नहीं है। लेबल्ड बाय क्या होता है कि उसके साथ जितना भी टेक्स्ट है वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूजर्स के लिए सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट का मतलब वो मार्क हो जाता है और वो उनको पढ़ के बताएगा, जो भी उसके अल्टरनेटिव हैं, जो भी कंटेंट है वो उससे हिडन नहीं होगा स्क्रीन रीडर से, वो सब का सब पढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन आर्या डैश डिस्क्राइब बाई में क्या होता है कि वो फुल डिस्क्रिप्शन, अगर वहां तो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया गया है तो वो आपको पढ़ के सुनाएगा। यानी लेवल छोटे पैमाने पर लेवल बाई यानी टेक्स्ट के साथ उसका कोई अल्टरनेट दे रखा है तो भी, और आर्या डैश डिस्क्राइब बाई अगर वहां कोई डिस्क्रिप्शन दे रखा है तो वो भी आपको पढ़ के सुनाएगा। आर्या डैश लेबल बाय और डिस्क्राइब बाय दोनों यानी शॉर्ट टेक्स्ट के लिए आर्या लेबल बाय और लॉन्गर टेक्स्ट के लिए आर्या डिस्क्राइब बाय, ये दोनों एट्रीब्यूट यूज होते हैं। आपको डिस्क्राइब से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। और दोनों ये आर्या डैश लेबल को छोड़ के ये दोनों आर्या डैश लेबल्ड बाय और आर्या डैश डिस्क्राइब बाय ये दोनों साइटेड यूजर के लिए भी विजिबल है, ठीक है। तो आई होप सो कि आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हर रोज एंजॉय करते होंगे क्लास को। Row 43, page 15. Row 44, column 1, heading level 1. Row 43, column 3. Column 2. Column 1, heading level 1. Column 2, column 3. Row 44, column 1, heading level 1. Column 2, column 3. Row 45, column 1, heading level 1. Column 2, column 3. Row 46, column 1, heading level 1. Column 2, column 3. Table with 47 rows and 3 columns, level 1. Row 47, column 1, heading level 1. Column 2, column 3. ठीक है, तो अब क्या है, आज आपका आर्या डैश रिपोजिटरी खत्म कर दिया हमने। अब नेक्स्ट सेशन लेंगे आर्या का कल कोई नया टॉपिक, ठीक है। आज ये खत्म हो गया, कल फिर से मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।